morning, students. Today I shall start the second part of this Debye-Heckel theory. Actually, Debye-Heckel theory is a long topic and it requires at least 2 or 3 lectures. So, previous lecture was just half of its total content, and from onwards, today I am starting the remaining portion. In my previous lecture, I had discussed up to equation number 12, which was like this: psi is equal to a e to the power minus kr divided by r plus a prime into a e to the power plus kr divided by r, where this psi is the electric potential, a and a primes are integration constant, r is the vector distance. Now, we have to solve this equation for evaluating the values of the integration constants a and a prime. So now we will evaluate the values of a and a prime in such a manner. Since psi becomes 0, that is potential becomes 0 as r increases to infinity. As r increases to infinity. This is the charge. For this charge, we have to calculate its influence, that is potential, and this is the radial distance r. So, at a very infinite distance, psi will be equal to 0. At a very infinite distance, psi will be equal to 0. So, I have written this. Since psi becomes 0 as r increases to infinity, a prime must be 0. Hence, equation 12 becomes like this. Equation 12 becomes like this. This term vanishes and psi is equal to a to e to the power minus kr by r. We get this value of psi. Now, we have already written k is equal to this much quantity, and for very dilute solution, this term, that is summation ni zi square, is almost 0. Why it is 0? Because n number of ions per cc. So for very dilute solution, value is very small and we take as almost 0. Hence k may also be considered as equal to 0. So when this term becomes 0, the entire term becomes 0 and k may be taken as equal to 0. And in that case, if we put the value of k is equal to 0 here, we get e to the power minus 0, that is, इसको जब हम लोग नीचे ले आते हैं तो ये e to the power 0 and e to the power 0 means 1. So equation becomes psi is equal to a by r. So we get the equation 40. Now in such a dilute solution, such a dilute solution means कि जिस कंडीशन पर हमने ये कंसीडर किया है कि this is almost 0, उस कंडीशन के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं कि in such a dilute solution, the potential in the neighborhood of any ion will be due to that ion alone. अभी हमने वो कंसीडर किया था कि किस जो पर्टिकुलर आयन के चारों तरफ एक आयनिक एटमॉस्फेयर है, और यदि हम ये कंसीडर कर लें कि वो जो है सो काफी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो वैसी स्थिति में ये कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि in such a dilute solution, the potential in the neighborhood of any ion will be due to that ion alone. क्योंकि सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है और उस पर्टिकुलर आयन के चारों तरफ और कोई आयंस नहीं है. Since other ions are too far away to have any influence, इतने दूर है दूसरे आयन कि उसका कोई इन्फ्लुएंस उनके पास उनके लिए नहीं हो रहा है. Further, if the ion is regarded as a point charge, the potential at a small distance will be given by this term, Zi into epsilon divided by d into r, where this d is the dielectric constant, r is the radius vector, and Zi is the valency, and this epsilon is the charge. Now, hence we may write this equation, that is, this potential A by R will be equal to this value. So, Zi into epsilon divided by d into r, or here r and r cancels out, and we are left with only A is equal to Zi into epsilon divided by. Putting this value of A,
we have calculated this value of A, and now we have calculated the value of A in equation 13. If we put the value of A for potential, psi becomes psi is equal to this one. So we get equation 15. Now if we take this e to the power minus x as equivalent to e to the power minus kr, then by expansion we will write 1 minus x plus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 and so on, and neglecting the higher powers of x, we are left only two terms, 1 minus x. So e to the power minus kr will become 1 minus x, that is kr. And now if we break the bracket, then we get such a equation 16, and in equation 16 there are two terms, and this first term, this one in the right hand side of equation 16 is the potential at a distance r due to given point ion where there are no surrounding ions. So this term is equivalent to the potential at a distance r due to a given point ion where there are no surrounding ions, and the second term, this is equal to the potential arising from the ionic atmosphere. Therefore psi I, that is potential due to the ionic atmosphere, is given by this term, that is the second term, Zi epsilon k d into 1 by k, और अगर इसको हम लोग ऊपर रखते हैं तो ये हमारा फॉर्म होगा इक्वेशन 17, and this is for dilute solution. Since the expression is independent of r, इस expression में r का कोई टर्म नहीं है, it may be assumed to hold when r is 0. तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये जो वैलिड है, ये इक्वेशन जो है सो वैलिड होगा जहाँ r is equal to 0 होगा. r 0 कहाँ पर होगा? तो जिस जगह पर हमने जो अपना चार्ज कंसीडर कर रखा है, जिसके लिए हम एटमॉस्फेयर बना रहे हैं और जो है सो उसका इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो बाकी आयंस काफी दूर दूर है, तो हम लोग उसके पोटेंशियल को बने उस आयन के एलोन इन्फ्लुएंस के चलते ही जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, ये कहता है कि सिंस द एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, इट मे बी assumed to hold when r is 0, so that the potential on the ion itself due to its surrounding atmosphere is given by equation 17. Now significance, physical significance of k. k जो हमने यहाँ पे ले रखा है, k is equal to this much, और k के बदले में हम पहले भी जो है सो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन लिख रखा था और डिफाइन भी किया था. This one, k is equal to this one, and the same value of k is taken here. Physical significance of k: if whole of the charge of ionic atmosphere were placed at a distance 1 by k from the ion, the potential produced would be like this one, that is Zi epsilon k divided by d, where d is the dielectric constant, or minus Zi epsilon by d into 1 by k. इस k को केवल हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो ये k का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हमारा है कि if whole of the charge of ionic atmosphere were placed at a distance 1 by k from the ion, अगर कोई आयन यहाँ पर है, ये अगर हमने कोई आयन लिया है, ये आयन कोई लिया है, और इससे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1 by k हम लोग लेंगे, तो उसके लिए जो पोटेंशियल है वो हमने ऐसा डिटरमाइन किया है, यही हमने लिखा है, which is identical with the value given by equation 17. जो इक्वेशन हमारा 17 है, ये उसके इक्विवेलेंट है जो अभी हमने लिखा है और एक्सप्लेन किया है. It is observed that the effect of the ion atmosphere is equivalent to that of the single charge of the same magnitude placed at a distance 1 by k from the ion. Hence, the quantity 1 by k can thus be regarded as a measure of the thickness of the ionic atmosphere, or as the equivalent radius of the ionic atmosphere in the given solution. So, this is the physical significance. K के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि अगर कोई आयन, पर्टिकुलर आयन जिसके लिए हम लोग वो पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस पर, तो 1 by k का डिस्टेंस पर अगर है तो उसके लिए जो वैल्यू हम लोग को निकलता है पोटेंशियल का वो इस वैल्यू से है. तो इसलिए जो क्वांटिटी 1 by k है
वो हम लोग क्या है, एज इसको हम लोग देखते हैं तो इट इज ए मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर और एज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर इन ए गिवन सॉल्यूशन. That is, it possesses the dimension of length and is generally termed as Debye length. क्योंकि ये जो K है उसको हम लोग डायमेंशन ऑफ लेंथ के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग Debye length के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और Debye-Huckel रेसिप्रोकल लेंथ भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ K, जो हमने पहले ही इस एक्सप्रेशन को लिखा है कि K किसके इक्विवेलेंट है, तो K के इक्वल टू हम लोग इतना वैल्यू लिखे हुए हैं पहले से. Its value will depend upon the number of ions of each kind present in the unit volume, that is concentration and valency of each kind of the ions. क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टर्म दिया गया है समेशन NiZi स्क्वायर, समेशन NiZi स्क्वायर, और Ni जो है वो नंबर ऑफ ions of each kind present in the unit volume and Zi is the valency of each kind of ions. If Ci is equal to concentration of ions of ith kind expressed in moles of gram mole per liter, then Ni will be equivalent to this one, that is Ci into N by 1000, where N is the Avogadro's number. So 1 by K को हम लोग कितना लिखेंगे, ये dt मतलब ये K है, तो यदि इसको हम लोग इन्वर्स कर लें तो 1 by K का वैल्यू जो है वहां पर जब लिखेंगे तो इसके इक्वल होगा. ये वैल्यू पुट करने के बाद में K is the Boltzmann constant, जिसकी वैल्यू इतनी है, और एप्सिलॉन जिसका कि हम लोग जो चार्ज बोल रहे हैं ऑन द आयन, वो जो है सो ये शुरू में इतना वैल्यू आता है जो फिक्स्ड है. और अगर ये कैलकुलेशन किया जाए तो ये कैलकुलेट होकर के 1 by K का वैल्यू जो है, इस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद इतना सेंटीमीटर में निकलता है, क्योंकि पहले हम लोग कह दिया कि ये जो है सो लेंथ का डायमेंशन है और ये एक तरह से डिवाई लेंथ कहलाएगा, और रेसिप्रोकल Debye-Huckel रेसिप्रोकल लेंथ भी कर सकते हैं. सो 1 by K के वैल्यू जो है सो इतना आएगा और वो सेंटीमीटर यूनिट में है. फॉर वाटर एज ए सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज 78.6 and if the temperature is 25 degree centigrade, that is 298 degree Kelvin, then the value of 1 by K becomes this one. यहाँ पर वैल्यू हम लोग जब पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट करने से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 19 के अकॉर्डिंग आता है, और ये किस ऑर्डर में आता है तो 10 to the power -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में आता है उसका लेंथ. Thus the thickness of the ionic atmosphere is observed to be of the order 10 to the power -8 सेंटीमीटर and it decreases with increasing concentration. और ये जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो लेंथ है वो जो है वो घटेगा. और एंड इंक्रीजिंग वैलेंसी, और वैलेंसी भी अगर इंक्रीज करते हैं तो भी, चूंकि दोनों जो है वो रेसिप्रोकली जो है उस लेंथ का यहाँ पर इक्वेशन में हमको दिखाया जा रहा है. नाउ if you want to calculate the energy of charged body, then we use this much formula. The energy of charged body, that is work expended in the process of the charging, may be given by the equation equal to half into charge into potential. So for an ion of charge plus Z I epsilon, the energy possessed in the virtue of its ionic atmosphere can be given by using the formula half into this charge Zi into epsilon into this potential value which we have already calculated. So now this becomes equation 20 after manipulation, where Zi epsilon K by D is the potential due to ionic atmosphere. This one is the potential due to ionic atmosphere of the given ion. किसी आयन जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके आयनिक एटमॉस्फेयर के लिए पोटेंशियल का वैल्यू बताता है. The corresponding energy for 1 gram ion can be obtained on multiplying the above equation with Avogadro number n. So here only n is multiplied and we get equation 21. Now the chemical potential of a particular ion in an ideal solution can be given by this well-known formula. Mu I is equal to mu I 0 plus RT ln Xi, where Xi is equal to mole fraction in the given solution. However, for a non-ideal solution, here in place of Xi we write as AI, where AI is the activity and AI, that is activity, is equal to activity coefficient into concentration Xi. So
instead of AI, we will have to write these two terms, and when we break according to the law of logarithm, we get two terms, RTLN xi plus RTLN fi. Question number 23, where AI is equal to activity of the ionic atmosphere and Fi is equal to activity coefficient. Now the difference in the free energy change comparing the addition or removal of 1 gram ion of the given species from a large volume of the real solution and ideal solution can be given by RTLN Fi. Because if we this equation 22 is for ideal solution, and equation this is for non-ideal solution. So when we subtract these values, these two values, we will get only this term RTLN Fi. So here we can write this difference in the free energy may be regarded as equivalent to the electrical energy of the ion due to its ionic atmosphere. So इस तरह से हम लोग जो है सो उसका चार्ट निकाल सकते हैं. In other words, we can also say that this is equivalent to the departure from the ideal behavior entirely due to interionic forces. दूसरे वर्ड्स में हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग को मिलता है वो किसके लिए है, इक्विवेलेंट टू द डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. क्योंकि आइडियल बिहेवियर में तो म्यू इज इक्वल टू मी आई प्लस RTLN xi हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब वही रियल के लिए जब हम लोग आते हैं या नॉन आइडियल के लिए आते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ जा रहे हैं फाई वाले. तो वो Fi है वो किसके लिए है, तो वो डिपार्चर है आइडियल बिहेवियर से. और हम लोगों ने ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया है अभी ये इस इक्वेशन 21 का, ये इसके ही इक्वल होगा. सो यहाँ पर हमने लिखा है RTLN Fi इज इक्वल टू माइनस दिस वन एंड LN Fi इज इक्वल टू RTI से हम RT से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म आएगा. और अगर माइनस साइन को हम लोग इधर ले आते हैं तो फाइनली हम लोगों को ऐसा इक्वेशन आता है. तो इस तरह से कितना डिपार्चर है आइडियल बिहेवियर से वो भी हमने उसको एक तरह से निकाल लिया, और वो कितना एनर्जी वैल्यू हम लोग को मिलता है वो भी हमने निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना था एनर्जी ऑफ द चार्ज बॉडी. ओके, थैंक यू.